Rekha and Archana Kumari are going to meet Tuna Devi's family in Patharghat village. और आप यही कह रहे हैं कि हमको दूर पड़ता है, हम नहीं जा पाएंगे। तो आंगनबाड़ी केंद्र है ना, वहाँ पर मैंने PSC है और आशा दीदी मेरे साथ में, जहाँ दीदी नज़दीक में आंगनबाड़ी केंद्र में काम कर रही हैं, वहाँ दिलवा। They are trying to convince them to take their 2-week-old son Shravan to the nearest PHC for sepsis treatment. चाहे जैसे हो, अपने बच्चे अपने जो कष्ट कर लें, अपने जो परेशानी हो, लेकिन बच्चे को सुई अवश्य लगवा लेना। जब मुझे पता चल जाता है कि बच्चे में सेप्सिस हो गए हैं, 10 लक्षण में से कोई भी लक्षण, तो मैं एएनएम दीदी को फ़ोन करके बताती हूँ। तो वो आकर के देखती है बच्चे को, फिर डॉक्टर के सलाह लेती है। सलाह के अनुसार वो बताती है कि इसको 7 दिन तक इंजेक्शन, जेंटामाइसिन इंजेक्शन लगेगा। हाँ, 7 रोज एतऽ सुई दिलबै छै। हमरा पास पतियो नहीं छै, हमरा सारा काम छै हमरे पास। हम केना जेबै सुई दिलबै लए? एतऽ जे छै एतऽ हॉस्पिटल अथीमे बुला के ला के सुइया दिला दै छै आंगनबाड़ी में। An estimated 9 lakh newborns die in India every year, and 2,60,000 of these deaths are caused by preventable infections. Studies have concluded that improved survival of young infants depends greatly on the prevention, detection, and timely treatment of systematic infections, especially sepsis. The Government of India recently formulated a policy guideline empowering ANMs to use injection gentamicin and ASHA to give oral amoxicillin for the treatment of newborns for possible serious bacterial infection or suspected sepsis. It shall address the challenges of timely care and reaching out to those living in the remote, inaccessible areas. Ministry of Health and Family Welfare has recently launched the India Newborn Action Plan, under which auxiliary nurse midwife, that is ANM, has been authorized to give injection gentamicin and oral amoxicillin for treatment of the infections in the newborn. Under the special circumstances, for example, where newborn requires the admission to the health facility, but somehow that referral to the hospital does not get materialized. Under such circumstances, she contacts the doctor telephonically and provides the treatment to the baby. This treatment by the ANM would save lives of many who cannot reach to the hospital or who cannot get referred because of any reason. The government of Bihar, Save the Children, and Care India have collaborated to implement this policy decision in 5 block PHCs of Saharsa district. This neonatal sepsis intervention is being supported by the Bill and Melinda Gates Foundation funded SNL project. Saharsa in Bihar is one of the 184 high priority districts for implementing focused healthcare interventions under the National Rural Health Mission. It is a flood-prone area marred by abject poverty, and large parts of the district can be classified as hard to reach. Although PHCs here were established to cater for a population of approximately 30,000, in reality, they provide services to more than 2 lakh people. Under this program, the ANMs and the ASHAs have been trained to provide sepsis treatment. They can now detect young infants with suspected sepsis. The ANMs were trained to administer appropriate doses of oral amoxicillin and gentamicin injection under specific conditions. हमने आशा को और एएनएम को बहुत अच्छी ढंग से ट्रेनिंग दे दिया है, जो क्या सब साइंस है नियोनेटल सेप्सिस का, और जैसे ही वो डिटेक्ट करेगी, देखेगी आशा जो इस बच्चे में ये साइंस मिल रहा है, तो ऐसे केस में वह तुरंत एएनएम के नज़दीक सब सेंटर पर जो है सो उसको लेके जाएगी, बतलाएगी। तो इसमें हमारे जो है केयर और सेव द चिल्ड्रेन जो हैं, ये इनका भी रोल जो है बहुत ही एडमायरेबल रोल है, बहुत ही सराहनीय रोल है जो ये लोग कर रहे हैं। Take the example of Tuna Devi. The Asha was able to convince her to visit the nearest PHC in Patharghat. The ANM first assesses and looks for the presence of any of the listed signs and symptoms listed in her health workers module. कितना है वजन बच्चे का? 4 किलो 500 ग्राम है। अच्छा ठीक है। She then consults the medical officer at the PHC.
who confirms it's a case of sepsis. आप बच्चे को एमोक्सिसिलिन और जेंटामाइसिन का जो डोज है वो देते रहिए साथ। She then administers the first dose of oral amoxicillin and gentamicin injection. बस 7 खुराक एकदम जरूरी है इस बच्चे के लिए, ठीक? Counsels her to breastfeed the infant baby frequently. She then fills up the treatment card and informs the concerned Asha about the young infant's condition, treatment and follow-up plan. अगर नहीं कहती है कि हम दूर है, हम वहीं ले आ पाएंगे, 7 दिन की बात है, तो उसको हम ये सलाह देते हैं कि आपकी नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र हो, वहाँ दीदी रहती हैं, वहाँ जाके लगवा सकती हैं आप, और या तो कोई लोकल डॉक्टर होंगे तो उनसे लगवा लेंगे। The next day, Tuna Devi brings her son to the Anganwadi center near her house to get her son his second gentamicin shot. When Tuna Devi arrives, Archana, the ANM, inquires how her son is doing. Has she been giving him oral amoxicillin on time? Is she keeping him warm and breastfeeding him regularly? She then gives Shravan his second shot and updates the treatment card, asking Tuna to come see her the next day. जो दूर दराज के केसेस हैं वो अगर यहाँ नहीं आते हैं तो हम लोग एएनएम से उसका कंडीशन पूछ लेते हैं और उसको अकॉर्डिंगली हम लोग यहीं से उसको बता देते हैं, एडवाइस दे देते हैं, तो एएनएम उसे ट्रीट करती है। वो एमोक्सिसिलिन या जेंटामाइसिन के द्वारा अगर ट्रीटेबल केसेस रहा तो वहीं 7 दिन ट्रीट कर देती है और इससे बहुत ज़्यादा केसेस ठीक हो जाता है। अगर उनसे नहीं संभलता है तो वो हम लोग के पास भेज देती है। Tuna's son will be safe from sepsis infection once he finishes his 7-day treatment. Many more infants like Shravan will be saved once the intervention is scaled up in other parts of the country. By taking sepsis treatment to every door,